Hello, hi guys. Today is my first live stream where and I would be sharing my tweet code contest. Yes, okay, join now. So let's see the first question, guys. Okay, it's loading. Oh, nice. I'm not late. I'm safe. Can we see the first question? Minimum swaps to move zeros to the end. This is the first question. Minimum operations to make an array modulo. Minimum swaps to move the zeros to the end. Minimum operations to make the array modulo. Second question was minimum swaps to move zeros to the end. क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में कि we have a number of zeros and we have to move in one swap we can move them to one end. So we have to find the minimum number of swaps. So like we have 30 and 4 5 to minimum number of swaps. To move zeros to the end. So first swap लास्ट जीरो से हम देखेंगे लास्ट जीरो को पहले स्वैप करेंगे फिर सेकंड लास्ट जीरो को स्वैप करके पहुंचा देंगे आई थिंक ये बेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें डिस्टेंस मिनिमम है आई थिंक सो क्योंकि इसमें डिस्टेंस मिनिमम होगी तो एक दो स्वैप लगेंगे इसमें ओके ओह ओके ओके सो वी आर हियर सो इसमें दो स्वैप लगेंगे इसमें एक स्वैप लगेगा ओह 2 मिनट्स आर वेस्टेड गाइस अभी तक एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था आज रेटिंग ड्रॉप हो सकती है सेकंड क्वेश्चन पे आ जाऊँ क्या पहले सेकंड क्वेश्चन कहता है मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक एरे मॉड्यूलो ऑल्टरनेटिंग वन वो नहीं नहीं पहला क्वेश्चन आ चुका है यू आर गिवन इंटीजर एरे नम्स इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज टू डिस्टिंक्ट इंडाइसेस एंड स्वैप nums I and nums of j return an integer denoting the minimum number of swaps uh, returning the minimum number of operations to move all the zeros to the end of the array all the zeros to the end of the array ठीक है so first one operation and second operation oh, okay one we have moved one zero and second zero is already in the end so one operation so this code is simple and equal to nums dot length so we have to make sure we can have moved zero to the end of the array okay um, I think we should iterate from the last and if we have found a non-zero element for that we should we can iterate from the last so for int I equal to n minus 1 I is greater than equal to 0 I minus minus what I'm planning to do is since it's the first question the constraints are very less I'm start planning to start from the last nums of i if nums of I is not equal to 0 then we can swap a 0 with it in a simple and we can count plus 1 we can do count plus 1 we can make a count equal to 0 and eventually we have to return count only so what I am planning to do is for int j equal to I minus 1 j I minus 1 because let's say we are on the n hmm, also we are on the n and j also greater than equal to 0 and j also gets subtract so if uh, hmm, if what I'm planning to do is count plus plus 1 and then we can just get rid of सबसे पहले is now it's 0 1 now
I will just make that j a 1, and I would start from there only. So instead of starting from j, we can keep an index and idx. idx, हाँ, we can keep a idx कि अभी हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. नहीं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, idx रख के, and j equal to I minus 1. j equal to I minus 1. Now if nums of j, if nums of j is equal to 0, so nums of j को 1 कर दे बस, and break simple. अब वही, कोई नहीं, इतना तो कुछ खास नहीं है. मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए, सिंपल कोड है. काउंट प्लस प्लस. तो 2 के लिए ये नेटवर्क एरर, हाउ द network error is here. Let's go fast, fast. Second question. We are given an integer array nums and an integer k. Okay. In one operation, we can increase or decrease any element by 1. Okay. An array is a modulo alternating if there exist two distinct integers, hmm, such that for every even index I, nums of I modulo k is x, and for every odd index nums of I modulo k should be y. Minimum number of operation required to make nums of modulo alternating. Okay. So firstly, let's see if this is running or not. Why 5? Why the fucking 5 is here? So we started from 12. Okay, we got a non-zero, na? Huh. For j we want a non-zero, buddy. For j we want a non-zero, and if we want a non-zero, mm, we would replace it. I think we just want a non we would just want a zero, na? Nahi, nahi. Okay. So we got a zero. We got a non-zero, and we got a non-zero like 12. And if we got a zero, like I'm starting from j equal to I minus 1, I minus 1. If we got a zero, we would make that nums of j be 1, and काउंट प्लस प्लस यहाँ नहीं होना चाहिए ना. यहाँ नहीं होना चाहिए काउंट प्लस प्लस. मैं बताता हूँ. सबसे पहले अगर हमारे को ज़ीरो मिल गया, तो लाइक लेट्स से कि वी हैव मूव्ड इट, एंड नम्स ऑफ जे को हम कर देंगे 1. अब एक पेयर वी हैव ट्रेवर्स, तो काउंट प्लस प्लस, एंड इनिशियली काउंट इज 0, एंड ब्रेक कर देंगे बिकॉज नाउ for this one the purpose has been fulfilled. Now let's run. So it is saying that I'm given integer array nums and integer k. Integer array nums and integer k. In one operation, I can increase plus minus 1 nums of I. Okay, an array is modulo alternating if we have odd indices, like even indices 0 to 4. Nums of should be, or even indices should be giving us a remainder x, whereas odd indices should be giving us a remainder y. So we have to make this array modulo alternating in minimum number of operations. Why the fucking, what the fuck is wrong with this, yaar? Nine minutes. This is a lot of time. 1 to 4 to 8. So we want a remainder. We are given x. We are only given k. Java. We are only given k, and when we want x, acha, it can be a same. It can be same. So, ठीक है. Can be same. I don't think so. It should be same.
So the should be given x and nums of I modulo k should be y. So सेम होना चाहिए तो फिर तो लाइक मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को सबको सेम रखना है, तो अभी क्या आ रहा है, लेट्स से ऑल हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स। अरे तो बहुत बुरी हालत नहीं हो रही अभी तो इतना ज़्यादा। लेट्स सी आवर फ्रेंड बुद्धिस्ट। His lead code is working well. What the fuck is wrong with my lead code? इन सेकंड क्वेश्चन लाइक मेरे को बस सिंपल है यार, मेरे फर्स्ट तो सबमिट हो आ गया फर्स्ट, सबमिट करो अपना फर्स्ट। नम्स जी को मैंने वन बना दिया। क्यों बनाया वन, ताकि लाइक अब इसके लिए कुछ होना नहीं चाहिए। बोल तो नम्स ऑफ लेंथ आई को मैंने स्टार्ट करा, मेरे हिसाब से इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। जे माइनस मैंने नम्स ऑफ जी अगर जीरो मिला फॉर अ नॉन जीरो, मेरे को एक जीरो मिला, मैंने उसको हटा दिया एंड मैंने काउंट बढ़ाया। नाउ तभी अब मैं आया हूँ, मुझे कोई नॉन जीरो नहीं मिला, अगला कोई नॉन जीरो मिला तो मैं उसके लिए भी देखा, जीरो मिला कोई टेंशन नहीं, जीरो मिला मुझे नॉन जीरो की टेंशन है। जिससे टू मिला, टू के लिए मैंने इस पर कर दिया वन। अब जीरो, अरे मुझे जीरो का भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, नहीं पर मैंने तो एक ही ऑपरेशन करा ना, मेरा पक्का ये कोड सही है, बस मेरा सबमिट नहीं हो रहा। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक एरे है, हमारे पास एक इंट के है, हमारे पास इंट के है और हमारे पास एक नम्स एरे है। सारी इवन इंडाइसेस का मॉड्यूले सेम होना चाहिए और सारी ऑड इंडाइसेस का मॉड्यूले सेम होना चाहिए। वी आर नॉट गिवन व्हाट शुड बी द रिस्पेक्टिव मॉड्यूलोस, वी वांट टू मेक द मॉड्यूलो सेम।